So, in the last class we have studied about electric field. Now we'll study about electric field lines or electric lines of force. So, first we have to understand what is the meaning of electric field line or electric lines of force. So, the first definition is electric field lines are the path along which a unit positive charge will move if it is free to do so in an electric field. So, consider there is any kind of charge distribution, maybe continuous, maybe system of discrete charge, anything. There is an electric field here. If I place unit positive charge, that means plus 1 coulomb positive charge. Due to the electric field, a force is exerted on the 1 coulomb charge. That's why it starts moving from its position. So, electric field line are the path along which unit positive charge will move. This path is called electric field line. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रे प्लस 1 कूलम चार्ज को छाड़ देबा फ्रीली. सी फ्रीली जो पाथ दे की मूव करिबा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो ए पॉइंट रे छाड़ले ए पाथ रे गला, ए पॉइंट रे छाड़ले नेट ए पाथ रे गला. सो ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए बडा रहला. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जदि फ्रीली मूव करिबा जो पाथ दे की जीवा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो एबे प्रॉब्लम आछी भाबो एटी गोटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि, गोटे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नै छै. आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होई छै बट 1 कूलम इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज. आइडा हम इलेक्ट्रिक फील्ड रे पढिथिले जदि 1 कूलम चार्ज को एटी रखि दबा ये ए डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्टर्ब कर दो बिकॉज़ दिस इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ चार्ज. सो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थिला सी डिस्टर्ब हे जो काहे कि ए डिस्ट्रीब्यूशन ही शिफ्ट हे जो. सो 1 कूलम चार्ज को फ्रीली मूव करेबा दिस इज अ इम्पॉसिबल टास्क. तो आपको हमें सेकंड वे रे डिफाइन करबा हाउ कैन वी फाइंड ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. So we'll go for the second definition. Electric field line is a curve. Curve in the sense it may be straight, it may be curved. All are called curve. Is a curve. The tangent at any point to which gives the direction of electric field at that point. So, एटी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करूची. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ फील्ड वेक्टर. सो ईच पॉइंट रो कोऑर्डिनेट अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू ऑफ डायरेक्शन चेंज हो. सो आमे एमिति गोटे कर्व ड्रा करबा जार जे कोनोसी पॉइंट रे टेंजेंट ड्रा करथिले सेही पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन दोथबो. देन दैट कर्व इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. What is electric field line? एमिति गोटे कर्व ड्रा करिबा जहार जे कोनोसी पॉइंट रे टेंजेंट ड्रा करले सेही पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करथबो.
then that curve is called electric field line. This is our second definition about electric field line. So kahi ki first definition ko hame problem re poduche because 1 unit positive charge is a very big amount of charge. It can disturb the entire setup. सेथि पाई हमें सेकंड डेफिनेशन को यूज करूचे. So next we'll go for properties of electric field lines. Next one is properties of electric field lines. So what are the important properties of electric field lines? First property is that they start from positive charge and terminate at negative charge. Start to हेबे positive charge रो start हेबे negative charge रे end हो. Originate हवा positive charge रो terminate हवा negative charge. They are never from negative to positive charge. So they don't form closed loops. कौन हवा पॉजिटिव रू स्टार्ट हवा नेगेटिव रे टर्मिनेट हे जीवो. नेगेटिव रू पॉजिटिव को केबे भी आसीबो नाही. सो कोनोसी कंडीशन रे क्लोज लूप फॉर्म करि परिबो नाही. काई क्लोज लूप फॉर्म करियार अछि माने जोनु स्टार्ट हला सेठी आसीयार अछि. तो पॉजिटिव रू जदी स्टार्ट हला पॉजिटिव रे तो टर्मिनेट हे परिबोनी तो रिटर्न केबे भी आसी परिबो नाही. सो they start from positive charge and terminate at negative charge. They are never from negative to positive charge, so they don't form closed loops. Next property is that ebe only positive charge achi or only negative charge achi. ebe positive charge achi to start he paribo but negative charge nahi to terminate he paribo nahi. सेमती नेगेटिव चार्ज अछि टर्मिनेट हे परिबो बट स्टार्ट हे परिबो नाही. तो आइसोलेटेड चार्ज थिले कोन हो. फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज they start from the positive charge and terminated infinity. जेहेतु नेगेटिव चार्ज नहीं टर्मिनेट कोडी हेबे infinity. So they are radially outward. For example plus q चार्ज अछि नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव रो स्टार्ट हेले टर्मिनेट कोडी हेबे infinity रे केमति रहइबो रेडियली आउटवर्ड. This will be the electric field lines for isolated positive point charge. Draw this. Now we'll go for isolated negative charge pai kon. For isolated negative charge they start from infinity and terminate at the negative charge. So they are radially inward. So they are radially inward. Suppose there is a isolated negative charge. So terminate would have a negative charge.
but start mood होगा infinity. Okay, this is for negative charge. Next property is that the tangent at any point of the electric field line gives the direction of electric field at that point. So this is already we have stated in definition. जदि एटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आसले हैला आर जे कोनोसी पॉइंट रे टेंजेंट ड्रा करबा एटा p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रे डायरेक्शन देला एटी गोटे पॉइंट q नेले दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट eq. Okay, then two electric field line never intersect each other because if they do so there are two tangents possible at the point of intersection which gives two directions of electric field at that point, which is impossible. So let two electric field lines intersect each other. This is line 1, this is line 2. Now they intersect each other at point P. Now at point P we can draw a tangent to the curve 1 according to this definition. Electric field line ro je konosi point re tangent draw kale ei point re electric field ro direction daba. So this will be the direction of electric field at point P. But we can draw a tangent to curve 2 also. So this will give the direction E2. Now point P रे electric field रो direction गुड़ा है परिबो E1 भी है परिबो E2 भी है परिबो. But electric field is a vector quantity. गोटे point रे आरो गोटे ही direction possible. दीटा direction possible ही नहीं. So एटा तो केबे भी ही परिबो नहीं कि both E1 and E2 are the electric field at point P. So कौन हबनी दीटा electric field line केबे भी intersect करिवे नहीं. So two electric field line never intersect each other. Next property is that the relative number density of electric field lines gives
the strength of electric field. That means suppose the electric field lines are like this. So कोठी relative density अधिक अछि कोठी relative density कम अछि कोठी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लागी लागी रहउछन्ती कोठी छाड़ छाड़ी रहउछन्ती एटा पॉइंट ए हला एटा पॉइंट बी हला सो पॉइंट ए रे लागी लागी अछन छाड़ छाड़ी होछन्ती क्लोज कोठी पॉइंट ए रे क्लोज पॉइंट बी रे छाड़ छाड़ी होछन्ती so relative number density is greater than A than B so we can say strength of electric field at A is greater than strength of electric field at B so point A will be the strong field point B will be the weak field so next uniform electric field that means electric field ର strength ସବୁ point रे equal so this is uniform electric field along the plane of paper or parallel to the plane of paper this is also a uniform field dots dojo perpendicular to plane of paper and directed outwards तमे जदि पेपर रे ड्रा करछो तम आड़ को डायरेक्शन रहउची लाइक दिस ए बोर्ड को मु ए वाला रिप्रेजेंट करछ माने बोर्ड को परपेंडिकुलर आ मो आड़ को रहउची एपटे रहउची दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ए वाला जदि ड्रा करछो perpendicular to the plane of paper and directed inwards in the sense 80 भी बोर्ड को परपेंडिकुलर अछि आ भितर को जाई छी एई बडा डायरेक्शन में जाई छी so these are the three representation of uniform electric field next electric field lines contract lengthwise this explains the attraction between two opposite charges so गोटे पॉजिटिव चार्ज नबा गोटे नेगेटिव चार्ज नबा one is positive charge second one is negative charge so जदि आइसोलेटेड थाते को बळे डायग्राम असता ना ए डायग्राम करनी देखो फास्ट बुझो तापरे ओरिजिनल डायग्राम ता करिया ए बळे रहि जाता ये बळे रहि जाता सो देखो एबे ए लाइंस लेंथ वाइज मिसुची तो लेंथ वाइज मिसिले कोन हबो कॉन्ट्रैक्ट करिवो इन द सेंस एई बडे रहया बदल रे it will become like this कोन हिजबो it will contract so due to contraction strength of electric field increases काहे छाट छाट दिला लागी लागी असला relative density बढ़ुची so in strength of electric field बढ़ुची so two opposite kind of charges attract each other so जदि original diagram draw करिबा it will something like this
exert lateral pressure. This explains repulsion between two similar charges. So दीटा पॉजिटिव और दीटा जाक नेगेटिव नवा. So electric field line sidewise मिसिला. Now both will exert a lateral pressure on each other. So ये ऊपर प्रेशर पकेला, या ऊपर प्रेशर पकेला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोबळे आइजबो एबळे पळेबो. इनिशियली एबळे थिला, ड्यू टू प्रेशर शिफ्ट करियला. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कोणाला वीक हैला. सो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होवा जको ताका भितरे कोन आछी रिपल्सन आछी. सो डायग्राम केमि आसीबो देखो. Next, electric field lines are continuous curves. They don't have sudden breaks or jumps. So I cannot say this is an electric field line because there is a break in this. Because जदि मु एबे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को छाड़ीबी, ये गोटे डेफिनेट पाथ रे जीवो. एबे एठू एठी डायरेक्ट जंप करि परिबनी. 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज गोटे डेफिनेट कंटीन्यूअस पाथ रे जीवो. So electric field lines are continuous curves. They cannot have any sudden breaks or jumps. Next, electric field lines never exist inside a conductor. Conductor भितरे electric field line exist करिबा नाही. Last one is electric field lines are always perpendicular to the surface of a conductor. So let this is a conductor. Let ako positive charge दिया है. तो आप जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करिबो केमति आसीबो. सरफेस रे सब पॉइंट रे परपेंडिकुलर आ भितरे एग्जिस्टिंग करिबो ना. ईच पॉइंट रे सरफेस रे ये परपेंडिकुलर रहइबो.